Assalamu alaikum. I'm back with a new topic for you, and inshallah, you must be, satisfied after watching this video, and you would finally come to know about what? About adjectives. What adjectives stand for? How do we use them? What are the kinds? What are the types? And what exactly is the order of adjectives? In a sentence, if suppose you find more than one adjective, then how would you adjust them? There is an order, and we'll definitely talk about it. But before getting down to business, I'll give you a little brief about adjectives. Adjectives are like colorful paint for words. They make sentences interesting and help describe things better. From a sunny day to a big mountain, adjectives add details that make our language more exciting and clear. Understanding how to use adjectives is important because it helps us express ourselves in a way that others can really picture and feel what we are talking about. Let's explore adjectives and see how these little words make our stories and descriptions so much better. So first of all, what is adjective? What it stands for? An adjective is a part of speech that can be used to describe or provide more information about a noun or a pronoun that acts as the subject in a sentence. Adjectives are found after the verb or before the noun it modifies. Let's have a look at the definition provided by Cambridge Dictionary, like how the Collins or the Cambridge Dictionary defines adjective. According to the Cambridge Dictionary, an adjective is defined as a word that describes a noun or pronoun. The Collins Dictionary gives a more elaborate definition. According to it, an adjective is a word such as big, dead, or financial that describes a person or thing or gives extra information about them. Adjectives usually come before nouns or after link verbs. So let's talk about degrees of adjectives. Did you know that adjectives can be used to compare similar qualities of different subjects that perform the same action? There are three forms of adjectives, or rather, three degrees of comparison, and they are positive or absolute form, comparative form, and superlative form. Positive degree of comparison, the positive form or the positive degree of comparison is the form of the adjective used in the original form. For example, this book is interesting. This form of adjective is used when there is no other subject to be compared. मतलब ये कि जो हम ये positive degree लेते हैं इसमें कोई comparison नहीं होता और इसको हम positive degree of comparison कहते हैं. इसके बाद जो मतलब इसकी जो kind आती है, that is comparative degree, means in this very form what we do, we compare two things. दो चीज़ों को हम compare करते हैं, we add them, और जब comparison में हम जाते हैं तो जो second degree है adjective की वो हम use करते हैं. For example, कि the comparative form of the adjective is used when two subjects performing the same action or possessing the same quality are compared. For example, the book I read yesterday was more interesting than the one I read today. अब अगर आप देखें इसमें then और साथ में more interesting ये हमने यूज़ किया, एक comparison हुआ. तो this is how comparative degree of comparison like particularly related to adjectives are formed. फिर हमारे पास आ जाता है superlative degree of comparison. The superlative degree of comparison is used when comparing the same quality of two or more subjects and to present that a subject is superior to two or more subjects in performing an action. For example,
This fantasy novel is the most interesting book that I have ever read. मतलब ये कि सुपरलेटिव में मुकाबला या कंपैरिजन दो के दरमियान में नहीं होता, इट्स मोर देन टू. दूसरा ये कि हम इसमें डेफिनेट आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं और एडजेक्टिव की जो थर्ड डिग्री है उसको हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने पॉजिटिव में यूज़ किया लाइक इंटरेस्टिंग, फिर हम आए कंपैरेटिव में मोर इंटरेस्टिंग और फिर हम आए सुपरलेटिव में द मोस्ट इंटरेस्टिंग. तो डेफिनेट आर्टिकल जो है ये थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले लगा इसमें. तो ये थे इसके जो काइंड्स हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स के. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स? कौन कौन सी टाइप्स हैं एडजेक्टिव की? सो लेट्स हैव अ लुक. एडजेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन when used in a sentence. The different types of adjectives are possessive adjectives, interrogative adjectives, demonstrative and compound adjectives. So let's take a start from possessive adjectives. Possessive adjectives, these adjectives like possessive pronouns are used to show or represent possession of quality. For example, my, your, his, her, their, its, whose. All of them are, possessive adjectives. Then comes interrogative adjectives. An adjective that is used to modify a noun or pronoun by asking a question is called an interrogative adjective. There are only a few, adjectives that can be termed as interrogative adjectives, like what and which. They are interrogative. मतलब इनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में यूज करते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर मेनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, अ नाउन और प्रोनाउन इन स्पेस और टाइम. फॉर एग्जांपल, दिस, दैट, दीस एंड दोस आर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश. कौन कौन से? दिस, दैट, दीस और दोस. ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. इन्हें हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक और दैट बुक, दीज बुक्स और दोज बुक्स. तो इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेट होता है. और जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो वो जो नाउन है या प्रोनाउन है वो मतलब उसको हम एक प्रॉपर उसमें लेके आ जाते हैं. एक ख़ास किताब की फिर हम बात करते हैं. इसके बाद जो हमारे पास आता है that is called compound adjectives. Compound adjectives consist of two or more adjectives that are combined together to form an adjective that can be used to modify the subject. Some examples of compound adjectives are cotton-tailed, curly-haired, absent-minded, happy-go-lucky, etc. So these are compound adjectives. अब जो फाइनल जिस चीज़ पे मैं आ रहा हूँ वो है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ऑर्डर है एडजेक्टिव्स का और कैसे हम उनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं. या अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते हैं डिफरेंट नेचर के तो उसकी ऑर्डर एग्जैक्टली क्या है. So the English language gives its user the liberty to use multiple adjectives to describe everything they can perceive with their five senses. There is, however, a particular order in which these adjectives should be used in a sentence. Let's have a look at how it works. The first component that should be placed in a sentence according to the order of adjectives is the determiner. Determiners include possessive adjectives, demonstrative adjectives, demonstrative pronouns and articles. मतलब सबसे पहले इनकी बारी है जब आप एडजेक्टिव्स को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं. और ये है क्या? फॉर एग्जाम्पल, माई, हिज, योर, हर, देयर, इट्स, दिस, दैट, दीज, दोस, ए, एंड द डेफिनेट आर्टिकल दी और दा. Then comes the quantity of the particular object in the second place. For example, 2, 10, a dozen, many, much, a few, several, etc. इनकी दूसरी पोजीशन होगी. फिर हमारे पास जो तीसरी पोजीशन आती है वो है a person's opinion about a particular noun is placed in the third position in a sentence with multiple adjectives. Just keep in mind that opinions can be general or specific. For example, beautiful, tasty, precious, horrible, pretty, elegant, lovely, etc.
ये ओपिनियन में एक बंदे के आ सकते हैं, तो इनकी जो पोजीशन है वो थर्ड है। द साइज ऑफ द नाउन कम्स नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ह्यूज, टाइनी, बिग, स्मॉल, मीडियम, लॉन्ग एटसेट्रा। ये फोर्थ पोजीशन पे आते हैं एडजेक्टिव्स। अगर फर्स्ट करें आपके पास पहले के 3 हो तो ये फोर्थ पे आएंगे। The fifth position can be occupied by the age of the noun. For example, new, old, ancient, young, etc. The shape of the noun is what takes the sixth position. For example, square, cubicle, round, circular, spherical, triangular, etc. तो ये जो shape है ये sixth position पे मतलब order में इनका आता है। Colors of noun take this next position after shapes in a sentence. For example, gray, purple, deep blue, etc. मतलब कि इनकी जो position है वो 7th position है और ये shape के बाद आता है। Then comes the origin of the noun in the 8th position. 8वीं position जो है वो origin की आती है। For example, Indian, Chinese, Spanish, Dutch, English, Pakistani, Sri Lankan, etc. The 9th position is taken by the material of the noun. For example, silk, cotton, wooden, glass, etc. इसकी 9th position आती है. In the last position, just before the noun, you can write the purpose or qualifier of the object. For example, sports uniform, vending machine, denim shirt, a jute sari, a painting brush, etc. The most important point that you should remember when using multiple adjectives is that the order has to be followed even if all types of adjectives are not used. मतलब अगर आपके पास ये 9-10 जो हैं अगर ये पूरे हैं भी नहीं तो अगर फर्ज करें आपके पास 6, 7, 8 है तो वो 6, 7, 8 के हिसाब से ही जाने चाहिए। ऑर्डर को you got to be very very vigilant about it. आपने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे आपके सामने आ रहा है। I saw a cute little white cat on the way home. इसमें आप ऑर्डर देख सकते हैं कि पहले पे डिटर्मिनर आया है, फिर ओपिनियन है, फिर साइज है और फिर कलर है। Likewise, have you seen the ancient Portuguese synagogue in Cochin? इसमें अगर आप देखें तो पहले डिटर्मिनर है, फिर एज है, फिर ऑरिजिन है। With this, today's topic comes to an end. I hope कि आपको adjectives का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ होगा कि how do we use them and what are they used for. इनकी types क्या हैं, इनकी kinds क्या हैं और exact इनकी जो है ऑर्डर क्या है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आते हैं then we got to know about the exact order of the adjectives. जानने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से ये चैनल ग्रो करेगा और ये फैमिली ग्रो करेगी और दैट्स ऑल। अपना ख़ास ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।